so let's get started with the next part of the SQL query. So I'm going to discuss SQL query in this Databricks notebook. So first and foremost, I'm going to define the libraries Databricks notebook source. What would be the Databricks notebook source? So I'm going to import PySpark dot SQL. This would be importing SparkSession. So using this as SparkSession, I'm going to initiate an object. This would be SparkSession.builder, and this would be app name. This will invoke an app name method. So inside this, I'm going to assign any name, second app, and then I'm going to call get or create. तो जितना आप ये फंक्शन लिखोगे ना उतनी बार आपको ये याद हो जाएगा. Okay. Spark session, is it the correct name? Spark PySpark dot builder app name. So just because of this I, it was showing that error. So Mm-hmm. let's see what kind of data set do we had. So we had data set in the download folder. Here we had the student data in CSV format. You can also open in Excel sheet. I'm going to delete this extra column which we created in earlier lectures. I'm going to delete it, and let's see, do we have other headers in a proper way? Yes, we do not have any extra columns here. That's fine. Otherwise, we'll have to transform this one. So I'm going to save and then close it, save, and let's say underscore and save. Now coming back to the file, here I'm going to upload the updated file inside the sample data. Upload current data set. Now I can copy the address of this path of this file, and I'm going to create a object which is storing spark dot read dot options, because we had more than one options. Here we had the header. So what is the header? I'm going to keep it true because this is the header I need. So by default, what it is like? Suppose if not putting a header equal to true, then I perceive by default it's a false. This is the okay. reason we will have to put. Okay, I'll check it. So if I'm going to make it true dot csv, and inside this csv I'm going to paste it here. So I'm going to remove this part, control X, and then run this code without header is equal to true. So I'm going to show HOW. Inside this show, I'll have all the values. Can you see it's showing false? Yes. This is the reason मैंडेटरी है उस हेडर को ट्रू रखना, otherwise we So won't. that is treating as a data, like the columns. Yes, and also in upcoming code later on you can update this first row as the column, but that would be additional statement, additional command for you. So why we are practicing in a different code, rather we can perform concurrently. Now I'm going to select particular column. Inside this select header, so we had the name,
and then df.email, and then I'm going to show that option only two columns are there, but it's going to display only two columns, not giving any transformation or not giving any progress of on these columns, nothing. Mhm, कोई mhm. mathematical operation, any date, standard deviation, minimum, maximum, you cannot find that value. Correct. We also had seen def dot select, and then I'm going to show all the columns dot show. So here we are showing all the columns as well. Mhm, So here we had the with column function as well. So mhm, with column, I'm going to display df is equal to df dot with column. So this would be the function. I'm going to invoke this function here. So mhm, this would be invoking roll number. And then I'm going to call this roll, and then here I'm going to cast this roll number with the string. So what is the value here? This is the column value. mhm. So before invoking this one, I'll have to import PySpark dot SQL dot functions. Mm. I'm going to import column comma lit. So we will be using these functions in upcoming in few minutes. Lead means? I'll that part as well. So first we will focus on column, which is using here. If you Mhm, want to see the schema or the value of this value of this, if you want to print the schema of this updated data frame, so you mhm, will find this roll number is in the format of string. mm, Otherwise, everything is showing in the form of this mm. one, string or double and everything. But here we are converting into the string. We are performing typecasting here. Okay. We can perform the some kind of transformation. Mhm, Just giving any example here. For example, I'm going to copy this value, and now I'm going to paste it here. So I'm going to convert into the integer. So let's say will Alter let's command is like, yes. So for okay. example, this is the name plus course. Mhm. So, like, Paste. suppose, like with column, I wanted to rename the column, then also I had to look Yes, with column. If I wanted to change the data type, then also I had to use the with column. yes. So I'm going to use column, and then let's say I'm going to assign new role, and then I'm going to run this code. Oh, got a string column. It should be column got a string. Could be column. So, It's okay, role is our column name, right? Yeah. And then we are modification with the new column. We are renaming the hmm. column. So, Just let me uh, see. It is missed. Maybe this is just because of rename this column. yes. So we had renamed this column using the with column renamed. तो with Mhm. column के अंदर भी बहुत सारे functions है. Those are
available for us. Okay. Okay, so let's rerun this part. Header infer schema is equal to true. Let's df.show, and I'm going to represent df.print schema. And using the print schema, let's see, do we have any integer value? We do not have any integer value. Otherwise, we can create particular column, sample data set. For example, to create data with the string, with the dictionary format. For example, Mm-hmm. this is the Sachin, Mm-hmm. and here we had the marks. Mm-hmm. This is the second value, Manish, and here we had 52. Here we had the third value, let's say Vipin, and then we had the 12. Now I'm going to use the column name separately. Columns is equal to, first column would be name, second column would be marks, right? Now df1 or df custom, I'm going to create this custom data set. This would be spark dot create data फ्रेम. तो ये जितने भी अलग अलग फंक्शन हैं, हर एक के अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि हमें क्रिएट करने के लिए और उसको इन्वोक करने के लिए यूज हो रहे हैं. Now data is the dictionary format we had just defined here, and what would be the columns? That would be the next value here. So if I want to show the df dot columns dot show, can you see this one showing the custom data set? Mm-hmm. Yeah, I mean, we have created this custom data set, and Yes, then we are giving the name. So yes, it's kind of we are not importing file and just creating the data set. yes. So using the df.custom, df underscore custom, if I want to print schema, and let's see, do we have integer column as the marks? So this is the long value, Mm-hmm. right? So अब हमारे पास में सारे integer और सारे string format में नहीं है. Mm-hmm. तो So अगर हम लोग ये df, अच्छा ये तो आपने एक सीखा. मिनट बस. df with new column, if I'm going to create df with new column, so this would be df underscore custom जो अभी हमने बनाया है. Inside this custom, I'm going to use this with column method. With this column method, I'm going to select the marks जो कि मेरा marks का value है. Mm-hmm. ठीक है. And then before this, I'm going to select the other column name, comma, and with this column marks, I'm going to add 10. And let's see, parenthesis का mismatch तो नहीं है. Yes, so we do not have parenthesis mismatch. So now I'm having df with new column dot show. Can you see we had name and marks? तो name का जो वैल्यू है वो हमारी पहली वाली जो नेम की वैल्यू है वो हमारी मार्क्स में क्या चली गई, इसमें चली गई. Mm, इसने but रिप्लेस कर दिया. हाँ, लेकिन डेटा टाइप्स उसका क्या था, न्यूमेरिक ही था क्या? हाँ, इसका मार्क्स का न्यूमेरिक था ना, लॉन्ग. अच्छा, मार्क्स का नहीं, मार्क्स का नहीं, अपना नेम का स्ट्रिंग था. हम्म. तो नहीं, नेम स्ट्रिंग के ऊपर नहीं कराया इसने, इसने मार्क्स के ऊपर किया है. नहीं, लेकिन नेम के अंदर आ रहा है ना वो. हाँ, क्योंकि हमने उसको नाम दिया है नेम. एक मिनट.
It's a confusing bit. This is the name Hmm. and this is the schema. Here we had name. Okay, that Now, is a string and long. Okay. ah, Now we are just creating a new column. hmm, तो नेम की जगह आप नेम मत दो ना कुछ अगर देते हो अलग या न्यू मार्क्स और marks अपडेट. old, हाँ, marks new. न्यू. तो कॉलम. इसको पुराने में ही चेंज करना है, तो वो मार्क्स की वैल्यू ही पुरानी वाली ही ढूंढ रहा है. हाँ, ठीक है. अभी आया है कि हम लोग ने एक नया टेबल एक कॉलम क्रिएट करा है जिसमें कि मार्क्स को अपडेट किया है. नेक्स्ट इसमें ठीक यस. है. हाँ, लेकिन ये अच्छा नेम एक्चुअली इसको लेना नहीं चाहिए क्योंकि नेम तो ऑलरेडी डिफाइन है. नहीं, ये जो वैल्यू है ना, ये क्या करा है इसने इसने एक अपडेशन किया है. दिस इज द मार्क्स ओल्ड को क्रिएट कर रहा है. और किसके साथ क्रिएट कर रहा है? पुरानी वाली जो मार्क्स कॉलम है उसमें 10 ऐड करके क्रिएट कर रहा नहीं है. नहीं वो अंडरस्टूड. हम्म. मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो नेम कॉलम है हम्म. नेम कॉलम में जैसे अभी आपने ये डाल दिया था हम्म. मार्क्स. हम्म. तो ये लेना नहीं चाहिए एक्चुअली क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रिंग. नहीं, ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे शो की हाँ. वैल्यू है. इट्स हम्म. नॉट अपडेटिंग दैट वैल्यू. ओके सो वो नेम तो अच्छा. नहीं नेम में भी जैसे कैसा है कि कॉलम नेम. ओके. एक सेम नेम कैसे ले सकता है मतलब एक नेम लिया था उसने उसमें मार्क्स डाल दिए थे हम्म. तो वो नेम में ही मार्क्स फिर से. नहीं नहीं, सी, वो जो नेम था ना, वो हमने जो नई कॉलम बनाई जिसमें हमने ऐड किया 10, उसका नाम दे दिया था न्यू कॉलम नहीं का. नहीं. हाँ नहीं वो ठीक है हम्म. लेकिन अगर आप डेटा सेट अगर सेम यूज कर रहे हो हम्म. डीएफ विथ न्यू हम्म. तो वो डेटा सेट में दो कॉलम में जैसे एक नेम है तो हम्म. उसमें तो मार्क्स और नेम अलग ऑलरेडी है. हम्म. तो अगर नेम ऑलरेडी है तो उसमें ठीक है ये अपडेट किया ये ठीक है दैट्स क्लियर टू मी. ओनली मुझे ये कंफ्यूजन था कि नेम जो है वो नेम दो दो बार कॉलम कैसे ले सकता है वो. नेम एक 2 बार कॉलम कहाँ ले रहा है? नहीं पहले ले लिया था ना एक नेम पहले लिया ने था. उसने नेम नहीं उठाया था. हमने क्या हाँ. किया था, जो कॉलम हम क्रिएट कर रहे थे जिसमें 10 होके आ रहा था, उसका नाम हमने नेम दे दिया था. ये जो अच्छा अच्छा. फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये क्या कर रहा है, जो नहीं वो आप ये नया कॉलम बनाओगे उसका हेडर नेम दे देगा. तो हमने बाई मिस्टेक क्या कर दिया था, उस हेडर नेम का नेम दे दिया था हमने उसको. हाँ लेकिन नेम ऑलरेडी था ना डेटा फ्रेम में. नहीं, तो उससे ऐसा नहीं है, हम उसको, तभी तो वो वहां पे कंफ्यूज होकर के एक ही दिखा रहा था, दो दो नहीं दिखा रहा था. हम्म, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये वाला नेम प्रिंट होना है, तो पुराना वाला अपडेट होके ये वाला वैल्यू आ गया जिसमें कि ये एडिशन आ गया. हम्म, इसी वजह से उसने पुराना वाला नेम नहीं दिखाया. वो उसने अपडेट करके क्या कर दिया, ये हम्म, जो मार्क्स न्यू वाला है वो अपडेट करके वहां डाल डाल दिया था. हम्म, तो पुराना वाला ओवर राइट हो गया. हम्म. सो यू मीन टू से लाइक अगर हम लोग ये कॉलम लेते हो विथ कॉलम तो इसमें हम्म. हम लोग एक्चुअली डेटा पे अपडेट कर सकते हैं. यस. दिस इज तो काइंड अगर ऑफ. मुझे सिर्फ नया कॉलम नहीं बनाना है मुझे सिर्फ अगर डेटा पे ही अपडेट करना है हम्म. तो भी हो जाएगा ना. हाँ. लाइक मुझे सिर्फ उसमें ही ऐड करना है सेम कॉलम है नो मार्क्स न्यू ओनली मार्क्स और उसके डेटा पे मुझे 10 प्लस करना है तो वो होगा ना इससे कि नया कॉलम बनाना ही पड़ेगा. नहीं, बिल्कुल होगा, वो भी होगा. हम्म, जैसे मार्क्स न्यू है और आपने क्या करा, इसको मार्क्स ही रखा. मार्क्स ही रखा. सो हम्म, लेट्स सी. कैन यू सी? हम्म, स्टार्ट हम्म, शोइंग updated old one. हम्म. It's not creating the new column, rather it's updating the old one. ओके सो मार्क्स प्लस वन कॉलम. ओके तो यहाँ ऑपरेशन हम लोग करते हैं विथ कॉलम पर जहाँ पर कि हम अपडेट डिलीट डिलीट वगैरह भी काम करेगा सब ना. हाँ, आगे एक एक करके सारे आएंगे. हम्म, So let's go back to the
For example, df.show, which is containing actual data set. So we are working on this data set. I'm going to use the lit command. So what is the lit command here? So df equals to df dot with column. So I'm going to select this method here, and from the name I'm going to select the lit, and then I'm going to select USA, then df dot show. Can you see? ओके, तो ये स्ट्रिंग फंक्शन है। Yes. ओके, स्ट्रिंग को अपडेट कर दिया है। ओके, सो जितने भी स्ट्रिंग है उस पे लेट कमांड यूज कर सकता हूँ मैं, ना? Yes. ओके, मतलब ये अपडेट किया है लेट को, नेम को हाँ. यूएसए से, बिकॉज ऑफ So it's going to literally update that name. So you are going to update that value by this value, constant value for all rows. It's going to add new column with the constant value. तो ये एक constant value के साथ में इस column को इसने create कर दिया. लेकिन विथ कॉलम दोनों में यूज करें हमने, हम लोग ने। Yes. लेकिन और इसने क्या करा है, नेम में जो भी कंटेंट था उस सब को यूएसए से रिप्लेस कर दिया. ओके, और पहले क्या विदाउट लेट हम लोग ने अगर यूज करते हैं तो वो, एक मिनट ऊपर जाना है आप। वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए. अच्छा, विथ कॉलम ही विद यूज कॉलम किया। और उसमें हम अच्छा, कॉलम मैथमेटिकल. लिखा। ओके, कॉल एंड लेट दो आपने इंपोर्ट किया था। हाँ. ओके। तो मैं एक बार फिर से डीएफ को अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि डीएफ में अभी रिप्लेस हो चुका है यूएसए. so I'm going to update this value. लेकिन ये अभी सिर्फ डिस्प्ले हो रही है ना, ये This is एक्चुअली। showing show value. ठीक है. अभी मैं now I'm going to rename this value country name. so can you see, name तो हमारा as it is है. now this is the new column which is consisting USA 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 in each row, and previously we had given name which replaced all the names here by USA. ओके। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने मार्क्स को अपडेट किया था. अगर आप सेम मार्क्स की वैल्यू लेते हो तो ये प्रीवियस कॉलम को अपडेट करके 10 ऐड कर देगा. हेयर ऑल्सो. और अगर आप कोई न्यू नेम लेते हो यहाँ पे इवन अंडरस्कोर या आयोटा ऑफ चेंजेस we are making here, then it will create new column with that column name and will keep remain the older one same. ओके, ठीक है। लेकिन इसमें ये अभी एक्चुअली राइट नहीं किया ना, इन प्लेस अगर ट्रू हाँ, करना अभी अभी सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है. तो वी हाँ। विल हैव टू एक्सपोर्ट दिस फाइल. ओके। एक्सपोर्ट आएगा बाद में. देखिए, इन प्लेस अगर ट्रू करते हैं तो वो अपडेट हो जाएगा, आई थिंक। Yes. ओके। So we can do several operations in a single shot as well. So this one is, for example, df dot with column. I'm going to invoke this one. So what is the marks here? Let's say marks, you are going to uh, perform some mathematical operation over the marks. So marks should be subtracted by 10. This is the first operation. I'm going to use with column with some different transformation. What is the different transform? Not rename. With column, I'm going to, let's say, country name. So I'm going to copy this name. With this country name, I'm going to use lit with the India, and then let's run. Let's display df.show.
Can you see this country name is India replaced, and also this marks has been updated. Subtracted 10 everywhere. ये सिंटैक्स एग्जैक्टली ये मैं दिन सिंटैक्स ही भूल जाता हूँ। नहीं, सिंटेक्स ऐसे नहीं होगा, आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे नहीं तो चीजें। ये कितने सिंटैक्स याद करेंगे ऐसे एग्जैक्टली नहीं मतलब नहीं, इसका जो वो है ना, विद कॉलम, हम्म, विद आपके जितने भी विद कॉलम रीनेम है, ये सारे हम्म, तो फिक्स है। अच्छा। ठीक है, नहीं तो बट जैसे अगर आप ऐसा एक्सप्लेन करें लाइक सपोज डीएफ डॉट विद कॉलम तो पहला वाला जो है वो कॉलम नेम आएगा, ठीक है, हाँ जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कॉलम है। हाँ, फिर हम लोग दूसरे वाले में जहां पर की मॉडिफिकेशन करना है उस यस उस कॉलम में लेंगे प्लस उसमें हम लोग जो भी ऑपरेशन करना है। तो यस फर्स्ट पैरामीटर इज द ओरिजिनल एंड देन सेकंड पैरामीटर इज लाइक जिसमें की ऑपरेशन करना है, यस, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डू यू रिक्वायर? ट्रांसफॉर्मेशंस करना है। ऐसे ही लिट में भी ऐसे ही है ना। यस, सेम। तो लेट में भी सेम है। So here I have just put a command which is consisting this value, where we had डॉट renamed 2 columns simultaneously, rename multiple columns in single line. तो जो gender है, I want to rename it as sex, and then role है, that is need to be changed by roll number. ओके So let's see, do we have same कॉलम df? Yes. ओके कॉलम नेम यू आर ओके। अगर हम लोग इसको डबल कोट में देते हैं जैसे आपने जो ये सेक्स लिखा डबल कोट में है तो हाँ, ये कॉलम पे ही ऑपरेशन करेगा ये डबल मतलब कोड और सिंगल कोड से मतलब नहीं है, ये सिंगल कोड पे भी काम करेगा। वी हैड नहीं ट्राइड ऑन नहीं सिंगल कोड नहीं ऑल्सो। नहीं दैट्स ओके कॉलम ओके नहीं लेकिन जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कॉलम हम्म पे आप रीनेम कर रहे हो हम्म। नीचे एक मिनट नीचे जाइए थोड़ा। अच्छा कॉलम रीनेम फंक्शन ही है ओके ठीक है। सॉरी मुझे कॉलम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। So now we ओके had changed gender by sex and role by roll number. ओके Rest आपने is कॉलम same. कॉलम रीनेम कर दिया। Yes. तो आपको अगर एक बार में 2 3 4 भी आपको सेलेक्ट करना है, so you can go ahead with that part ओके ओके ठीक। concurrently in order to reduce your number of lines in the software. So हम्म we can do the same part using the select. As I said कि एक ही काम हम multiple तरीके से कर सकते हैं. So using the select as well, we can perform the same operation. So inside the column, I need to change this as alias. So alias concept is basically taken from SQL. हम्म तो SQL में हम alias यूज करते हैं, जैसे select star from name गॉट as इट। full name. So here we are giving the full name, and now finally showing that part. तो हम लोग इसको यहाँ भी शो कर सकते हैं डॉट शो लगा के है ना। Yes. So this is showing the single column here. ओके So let's see whether it has changed entire data set at the location or not. नहीं नहीं No. So नहीं which करेगा। is not there. Whereas this part is done, क्योंकि जो पहले हमने किया था column और rename with column rename, that changed actual data frame. हम्म But using the select, we are not changing. Okay. Can I assign this operator, this value to different variable? Let's say I'm assigning df itself, मतलब कि ये df को ही अपडेट कर रहा है। ओके तो पुराना वहाँ df पर जो है वो है इसके साथ में नेम के नेम साथ में है। आई एम गोइंग टू असाइन दिस वैल्यू। आई विल हैव टू रिप्लेस रिमूव दिस वन, क्योंकि वो शो का ऑपरेशन है, बट दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द एलियास नेम हियर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले df डॉट शो शो। नहीं हुआ है। नो कर एक मिनट। कैन यू सी दिस इज यस शोइंग द फुल नेम। हाँ वो जो वैल्यू है वो असाइन कर दी हम लोग ने तो फिर हाँ, यही शो बट करेगा। बट इसमें नाउ दिस df इज कंसिस्टिंग ओनली वन कॉलम। अब इसमें सारे कॉलम अच्छा रिमूव हो चुके हैं, because we had not selected all the columns there. So we just selected only one columns. So this is the reason we had to update our df from the original data frame. ओके क्योंकि अभी आप आगे जो भी कोड चलाओगे, कहीं भी आप इसको रीड करोगे,
वो एक ही कॉलम के साथ में रीड करेगा। आप चाहें इसके बाद आगे 10 कमांड्स लिख लो, 20 कमांड्स लिख लो, 50 कमांड्स लिख लो, उसको कोई भी कॉलम नहीं मिल रहा है, उसको केवल एक ही कॉलम मिल रहा है डीएफ के अंदर, दैट इज फुल नेम, because we just updated using the single column. Okay. Now I just updated that df. So if I will show this data set again, ऊपर जाके मैंने फिर से उसे import कर लिया. Now can you see सारे जो transformations है they all revoked. ठीक है. The most important part is SQL query में जैसे होता है. So for example here we had this one. I'm going to add the filter rows as SQL query, as we do in SQL query. Like where condition. Yes. So I'm going to make it filter rows as SQL query. So for example, I'm going to apply this filter function. This filter function would be with respect to which column? So I'm going to show course. So I want to see the course which is equals to. Single equals to means we are assigning something, but double equals to means we are comparing. So I'm going to show this part. So it will depict only database related course. Okay. 20 rows. ठीक है. If you want to make other filters, row wise filter, so this would be filter, but here with respect to marks. So now I need marks, the candidates those have obtained greater than 50. So I need that rows only. So these marks are showing those are having this one only greater than 50 marks, greater than 50. Correct. So this is the difference between the previous column, और वो तो सिंपल हमारे ऑपरेशन से जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज हो रहे हैं, बट नाउ वी हैव मूव्ड अप. आपने एक और क्वेरी देखी होगी, इफ यू हैव रिगार्डिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम student, this is the table name where course in करके एक क्वेरी होती है. Multiple. हाँ, and this course is like say db, this is the multiple values, this is the cloud second value. I'm searching for, oops, I'm bothered about focusing on these three courses as well. So I need to perform the same operation inside the PySpark. Why I'm switching from SQL to PySpark? Now you know the answer. So I'll have to store this variable course value, and this is kind of list. Inside this list I'm going to make filter method again. Here I'm going to use df.course which is having is in. So in operation जैसे यहाँ पर है, but we do not have in operation, we had is in method. Is in method over this variable. I'll have to paste this variable so that I'm not making any typo error. So I'm going to show this value, make sure we do not have any typo error. Yes. Can you see? It's showing only db clouds oops, db cloud oops, db cloud oops, nothing else. तो अगर मैं इसमें ये अगर वेरिएबल नहीं बनाऊं और डायरेक्ट अगर इज इन में अगर ये डाल दूं, Definitely it will work. I'm going to paste it, I'm going to comment this part, I'm going to copy this इसको value. अच्छा, इसको मतलब ये इस ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्या कि अच्छा लिस्ट में. तो अदरवाइज अगर आप ऐसे लोगे, सो हाउ वुड यू एनेबल कि ये क्या है? Let me check whether it is accepting this. This df is this one. So df column, if it is provided, fetching
जो फेड किया गया है वो लिस्ट फॉर्मेट में है, तब तो आंसर आ रहा है। यू कैन सी इट शोइंग प्रॉपर आउटपुट। लेट्स सी नाउ सेट के फॉर्मेट में या दूसरे राउंड पैरेंथेसिस में ये लेगा। Do we एरर have mismatch? The Java feature is not supported literal for this one class objectives. It's not accepting that round parenthesis. Okay, ओके first and foremost, let's see we have correct पेयरिंग। तो पेयरिंग तो करेक्ट है हमारी, यहाँ पे 3 स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 एंड हो रहे हैं, एंड ये हमारा शो का पैरेंथेसिस है। बट मेन फोकस इज वी इट्स नॉट एक्सेप्टिंग सेट और एनीथिंग, इट्स एक्सेप्टिंग लिस्ट वैल्यू ओनली, लिस्ट फॉर्मेट। लेकिन ये एज ए टपल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है क्या? जैसे नहीं, कहाँ कर टपल रहा है? नहीं कर रहा है ना? नहीं कर रहा है। ओके Okay, so if I am showing a search, if you want to search course with particular string pattern, जो हम उसमें भी करते हैं, जैसे परसेंटेज के साथ में होता है या अंडरस्कोर हमारा होता है सीक्वल में, तो उसके बेसिस पे हम पाईस्पार्क में कैसे सर्च करते हैं। लेट्स सी df.filter and here we had df.course and course नहीं, हम करते हैं, लेते हैं name। if this name is, मुझे उस कस्टमर का पूरा नेम नहीं पता है, बट आई नो दिस इज Like. गोइंग टू स्टार्ट्स विद some initials। तो what are the initials? let's say a a से स्टार्ट हो रहे हैं, and let's display this output। name dot starts with। Okay, start with is also a function. yes, so in the same, आप जैसे सीक्वल में भी देखोगे तो सीक्वल में भी बहुत सारे हैं। Like लिखते हैं हम लोग हाँ, जनरली। उसमें लाइक लिखते हैं, और लाइक में भी जैसे आपको देना पड़ता है परसेंटेज परसेंटेज। ए, जैसे ए परसेंटेज, तो मतलब कि ए से स्टार्ट होके वो आगे कुछ भी हो तो आपको देगा। ओके ऐसे ही आपको उसमें ही सेम और है, एक उसमें है कि परसेंटेज डी परसेंटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैटर्न? वो तो जो भी हो आगे पीछे सभी का आ सबको जाएगा। लेगा, बीच में कैपिटल डी होना चाहिए। नाउ अगेन वी हैड द अंडरस्कोर एस परसेंटेज, इसका क्या मीनिंग है? ये मतलब एंड तो एस पे होगा। नहीं, नहीं ना रॉन्ग। मतलब कि एस नहीं, इसमें क्या होगा? अंडरस्कोर अगर फर्स्ट पे आना चाहिए, जो भी अंडर एस के पहले अंडरस्कोर है वो वैल्यू ले लेगा। नहीं, नो, अगेन रॉन्ग। इट्स सीकिंग की फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी अल्फाबेट है, पहला कैरेक्टर कुछ भी है, दैट्स एक्सेप्टेबल, बट दूसरा कैरेक्टर एस होना चाहिए। अच्छा अच्छा। और तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद में कुछ भी पैटर्न हो, दैट्स एक्सेप्टेबल फॉर मी, बट आई नीड सेकेंड लेटर ऑफ दिस वन। ओके, सेकंड लेटर शुड बी एस, करेक्ट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अंडरस्कोर 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 एंड देन पी एंड देन परसेंटेज, इसका मीनिंग क्या है? मतलब दो कैरेक्टर लेगा, पैडिंग हो रहा है ना ये। फर्स्ट 2 कैरेक्टर कुछ भी होने चाहिए, हाँ, थर्ड कैरेक्टर पी होना चाहिए, पी होना चाहिए, हाँ। और उसके बाद में कितने भी हो, आई एम नॉट ले, एक्सेप्टिंग। वो एक्सेप्ट ठीक लेगा। है, ऐसे ही इसमें एक और होता है, लाइक अंडरस्कोर के अंडरस्कोर। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि बीच में के होना चाहिए, ओके, और इधर साइड में जो भी वैल्यू लेगा। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग ई, so if I'm saying penguin, so will it accept? तो ये तो एक्सेप्ट करेगा। पी हाँ करेगा ना ये। रॉन्ग, इट वोंट एक्सेप्ट, गलत। एक ही आगे पीछे एक ही एक लेगा, आई थिंक। यस,
ये परसेंटेज नहीं है, ये हाँ अंडरस्कोर है, तो ओके, केवल तो 3 हाँ कैरेक्टर लेगा, तीन जिन कैरेक्टर तीनों लेगा। में सेकंड वाला मैंडेटरी है ई होना। तो ये अगर लेगा, इसके अलावा हाँ पहले और तीसरे पोजीशन पे कुछ भी कैरेक्टर है दैट्स एक्सेप्टेबल फॉर मी, बट सेकंड ई होना ही होना चाहिए। ये रेगुलर एक्सप्रेशन सब। हाँ, तो इसकी जब मैं सेशन लेता था तो उसके लिए मुझे सारे याद हैं। तो ऐसे ही एक होता है कि जैसे आपको स्क्वायर में भी आप लेते हो, सेम स्क्वायर में अंडरस्कोर एंड दिस इज ए बी सी डी ई एंड देन परसेंटेज। इसका मीनिंग क्या है? दिस माइट बी द इंटरव्यू क्वेश्चन, जैसे अगर कभी टेक्निकल आपका राउंड हुआ तो उसमें पूछ सकते हैं। हाँ ये रेगुलर एक्सप्रेशन में पूछते हैं लोग। हाँ, ए बी सी डी ई परसेंटेज, आइडिया नहीं है मुझे। फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी है, एक मिनट, इन सीक्वल लाइक ऑपरेटर्स, फर्स्ट ऑपरेटर कुछ भी है, बट सेकंड में ईदर ए और बी और सी और डी और ई ओके सारे एक्सेप्टेबल हैं, और थर्ड ऑनवर्ड्स कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए लेंथ का, मुझे उससे मतलब नहीं है। ओके। जैसे आप कोई लैपटॉप का ब्रांड लेना चाहते हो तो आपने आईफोन का ही ब्रांड लेना है, तो आप यहाँ पे आईफोन लिख दो। अब उस आईफोन का कोई भी वर्जन है, 16 है, 17 है, 18 है, सॉरी कहाँ पहुँच गया, 16, 15, 12, 10, 9, ये सब है तो आपको एक्सेप्टेबल होगा, बट देन ओके दैट वर्जन मस्ट बी आईफोन या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए। ओके। Now in the same I'm going to copy the same and paste it here. Now I'm going to make it this one. What is the meaning of this? Iota of changes here, but output will be entirely different from the previous one. इससे बिल्कुल different होगा इसका output. मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसके अलावा, ए बी सी डी ई को एक्सक्लूड करेगा। हाँ, सेकेंड पोजीशन पे नीदर ए नॉर बी नॉर सी नॉर डी नॉर ई, रेस्ट कैरेक्टर्स आर एक्सेप्टेबल। तो इनका इसका उल्टा है ये, जस्ट कि जहां पे मैंडेटरी कर रहा है कि सेकेंड पे है ये सब आने चाहिए, जबकि ये यहाँ पे कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। इसी को मैं एक और बस लास्ट है ये, आप कहोगे कहाँ पहुंच गए सचिन। A to K, what is the meaning of this A2? And I'm sure कि आपको ये जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से हाँ जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। What is नहीं, the meaning ये of this one? ये ए टू के इंक्लूडिंग ए टू के पूरा वैल्यू लेगा ये। Yes, developers are a bit lazy in typing, and of course we are not typewriters. So A B C D E F G H I J K L K. So rather than writing this entire string A से लेकर K तक पूरा लिखने, जैसे हमने A से लेकर E लिखा है, we can give this range. रेंज And also this square bracket means इनमें से कुछ भी, either this, इंक्लूडेड। हाँ इनमें से कुछ भी एट सेकेंड पोजीशन। और इसी का जब आप ये समझ गए हो तो आप ये भी आराम से समझ जाओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट, दिस वन। हाँ मतलब ए से लेके के तक के नहीं लेगा। यस, एल हाँ से लेकर जी तक, हाँ LMNOPQRSTUVWXYG। ठीक है। So here also we had the same. So let's say coming back to the our main filter. So here we had the filter and we had seen the filter path. This is the starts with. So I'm going to copy the same command and here I'm going to replace this start by end. This is going to show start by A. So can you see it's not showing anything? Let's say capital D. Will it show anything? No, it's not showing anything. Let's say small d. We had the Hillard, Wild, Harwood.
so many names are there, those are having D at the last place. अच्छा, एक चीज बताइए, Hmm. इसमें कंस्टेंट रहेंगे कि नहीं? Constraint means? कंस्टेंट इन द सेंस, ये डेटा सेट जो है, अभी मुझे देखना है कि कंस्टेंट इन द सेंस वो पीके, प्राइमरी की वगैरह जो रहते हैं। हाँ, वो है, वो आगे हम देखेंगे इसके बाद में। अच्छा। जैसे फॉरेन की आप बोल रहे हो, प्राइमरी की बोल रहे हो। हाँ, प्राइमरी की लाइक फाइल में ही मुझे पीके आ रहा है प्राइमरी की। हाँ, तो अगर मुझे उसके कंस्टेंट देखना है तो स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा डेफिनेटली एक्चुअली। डेफिनेटली इसका स्कीमा आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। हम्म, हम्म, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट्स विद की जगह आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट कंटेन्स। तो बीच में कहीं पे भी, जैसे कि आपके है HAR, तो आपके कस्टमर का आपको पूरा नाम नहीं पता, बस आपको ये याद है कि HAR उसके नेम में कहीं आता है। तो you can search by contains, which is consisting har noise, har wood. These are customers or candidates, those are having HAR in between names. तो जो परसेंटेज वाला सिनेरियो है, that is replaced by contains. अब ये सब फंक्शंस भी याद करने हाँ, एक एक बार पड़ेंगे। आप देखोगे तो याद हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली कैसा है, एसक्यूएल में तो आइडिया है, हाँ हाँ, लेकिन कैसा होता अब है कि दो बार अभी तीन बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन बहुत फंक्शंस है ना, अभी हाँ जैसे विंडोज फंक्शंस वगैरह भी रहते हैं। हाँ, विंडोज बस। फंक्शन पे करेंगे क्या हम लोग एक? हाँ, starts with, ends with, contains, and I'm going to use the df.filter. Inside this filter, let's say name.like. जैसे उसमें like command होता है. Now I can give the percentage s, percentage e, and then percentage. So I need this pattern. Let's show this value whether it is any name is containing s and e anywhere. Can you see these names are containing s and e everywhere? तो ये सारे के सारे नेम जो है वो s और e लेकर के मूव हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये तो हम लोग इसमें लिख रहा है पाइस्पार्क में, हम्म। अगर मैं स्पार्क डॉट एसक्यूएल और स्पार्क डॉट एसक्यूएल लिख के और मैं पूरा सिंपल एसक्यूएल की कमांड चलाता हूँ, हाँ, ठीक वो है? भी आएगा, आगे आएगा नहीं, लेकिन इनसाइड दी इसमें पैरेंथेसिस। डिफरेंस क्या रहेगा, मतलब उसका मेरे को मुझे डिफरेंस ये ये। है कि आप उस केस में सीक्वल की क्वेरी को रन करा रहे हो, और नहीं नहीं, यहाँ वो पे तो मैं आप करा पाई रहा हूँ। स्पार्क की क्वेरी को रन करा रहे हो। नहीं तो एज ए, अगर मैं सीक्वल की क्यूरी रन करा रहा हूँ तो उससे परफॉर्मेंस पे डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो आप सीक्वल की क्वेरी स्पार्क के थ्रू करा रहे हो। तो यूजिंग दी तो फिर स्पार्क अगर आप कोई चीज कराते हो तो आपको डिफरेंस इतना नहीं आता है परफॉर्मेंस में। नहीं, लेकिन फिर मतलब कि नहीं, ऐसा है ना, वो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो लोग ये सब नए नए मेथड याद नहीं करना चाहते हैं, हम्म उनके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे कस्टमर चले जाएं कि पाई स्पार्क ना यूज करके वापस से सीक्वल में चले जाएं। तो उनके वर्क को ईज करने के लिए उन्होंने मेथड दिया है कि आप सीक्वल डॉट कमांड और उसके आगे आप इस कमांड के आगे आप वो कर दो, जैसे यहाँ पे लिखो और इसके आगे आप उस सीक्वल की क्वेरी लिख दो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये आप सीक्वल क्वेरी लिख सकते हो। सेलेक्ट। बट ये आप देखो, आप ये वाली जो सीक्वल क्वेरी चला रहे हो ये स्पार्क के थ्रू चला रहे हो, और इफ यू रिमेंबर कि स्पार्क इज ऑल्सो फैमिलियर और कंपेटेबल विद बोथ द लैंग्वेज पाइथन एंड सीक्वल। तो पाइथन नो को भी इसने एक्चुअली, अपने साथ लिया, सीक्वल को भी लिया, जावा, लेकिन कुछ ही लैंग्वेज हैं, केवल 4, और आर लैंग्वेज। तब आप कहो कि हम तो पहले आर यूज करते थे, अब स्पार्क में आर क्यों यूज कर रहे हैं? नो, वी आर यूजिंग दी आर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट थ्रू स्पार्क। ओके। जैसे नहीं, आप लेकिन कहो कि मेरा मेरा क्या है? हाँ, हाँ। जैसे आप कहो कि नहीं, पहले हम अपने हर चीज उस पे करते हैं, अब यही सारी चीज हम क्लाउड पे करेंगे, AWS पे करेंगे, या एज्योर पे आपको बोलेगी कंपनी करो, तो आप बोलोगे हम तो सारे प्रैक्टिस ऑफलाइन करके आए हैं, तो हमें एज्योर पे वही सेम काम क्यों करना पड़ रहा है?
तो ऑफ कोर्स वहाँ से वो जो उनकी प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में आ रही है। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, हम्म, जैसे कि ठीक है, ये PySpark है। कर देता हूँ। तो let's talk about our progress on our ongoing topic from the scratch. So we had covered till now this Databricks notebooks using the get or create and Spark option. Just imported the data set, then show, then I just printed the schema here and also print particular columns name. And this is select star, and here we had the with column new function, new method, which is selecting or renaming my cast or my data type or particular column, which is roll number here. So here I am having all the columns, updated column with column renamed. I just rename particular column name. And this is least asked question in the interview, how to rename any column. No one will ask you. You just know this concept कि yes हम कर सकते हैं, but this is not the interview question, to be very frank. आगे जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आगे जो हम लेवरेज अपने कोड करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी हम सीखेंगे, दैट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन. How to select particular column, how to replace where in clause from the SQL. We are just selecting this column using the create data frame, and create data frame itself name explanatory. We can go with this, and now I'm going to rename this and adding some calling. This is the transformation first transformation we just performing, and later on we just look at the lit command. So today we just focus on the column col and the lit command. So lit command is for literal, means string String. column, where the lit this column is for numerical values. So with column we can perform the same transformation or same updation in a single line as well. So rename multiple columns in a single line, yes we can do. So select the columns here, and then here we are going to select giving the alias name of any column. So here I just selected single column. Now filter rows as a SQL query, yes I can go with the where clause. So this is the filter with the comparison greater than 50. Then we had the specific rows inside the course column is in. This is the is in method. Okay. And here we had later on we just replace extra variable with the constant one. So we are going to keep it consistent using the db and cloud using the list element. Now searching course particular string element. So now we had these so many list values, for ठीक है. example this one, and then we had this value, then we had this pattern. So अभी तो ये सारे आपको क्लियर हो गए ना? So certainly you will find single question. अब ये आगे भी यूज होंगे जब हम SQL क्वेरी करेंगे, तो उसमें भी हमारे ये सारे यूज होंगे, और दिस कॉन्सेप्ट वोंट बी इन वेन कि हमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे SQL के ऑपरेटर्स. Start with, then we search for the start with, ends with inside the string, then contains, and then the pattern of the same. So Okay. this is done. So let's talk about any issue that have come up since last code inside the PySpark. Anyone? Any question? नहीं, अभी तो नहीं है. बस हम लोग थोड़ा लूप को एक बार थोड़ा जल्दी देख सकते हैं क्या? Sure.